great good morning to everyone. So today the first thing we did was solution. Now let's move to chemical kinetics, right? So it's like that. Now where should I start from? Temperature dependence of rate of equation, chemical kinetics. Okay, factors influencing rate of reaction. So if I could increase the concentration, maybe this reaction would go faster. Concentration of reactants rate generally increase when concentration of reactants increase. जैसे जैसे रिएक्टेंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट भी लगे तो कहते हैं रेट भी बढ़ता जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट फास्ट रेट पे बनेगा, राइट। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते तो ये होता है हमारा नहीं पहले इफेक्टिव इन्फ्लुएंसी रेट ऑफ रिएक्शन में हमारा कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया। उसके बाद क्या है सरफेस एरिया, सो स्मॉलर इज द पार्टिकल साइज ग्रेटर इज द सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज कम होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और फास्टर ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। Presence of catalyst, the rate increases by adding catalyst. It provides an alternative path for reducing the activation energy. It does not alter the delta G and delta H of a reaction. डेल्टा जी और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर नहीं करता है वो, ठीक है। तो हमारा क्या कहते हैं ये रिएक्टेंट हो जाए एनर्जी ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट पार्ट रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट। द इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन reaction path without catalyst reaction contain potential energy. Presence of catalyst rate increases by adding catalyst. It provides an alternative path of reducing the activation energy. It does not alter delta G and delta H of reaction. टेम्परेचर क्या होता है रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे से हमारा रेट भी बढ़ेगा। तो हमने जो हमने देखा फैक्टर इन्फ्लुएंसी रेट ऑफ रिएक्शन हमने चार चीज़ें देखी, एक तो कंसनट्रेशन, एक तो सरफेस, एक तो कैटलिस्ट और एक तो टेम्परेचर। अब हम लोग बात करते हैं किसकी कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। नहीं तो हम हाँ कंसनट्रेशन रिएक्टेंट में हमने देखा कि दो चीज़ और है, रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट। तो द एक्सप्रेशन विच प्रैक्टिकली रिलेट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो हमारा एक्सप्रेशन जो कि हमारा पर्टिकुलरली रिलेट करेगा रेट ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ पर्टिकुलरली रिलेट्स विद द एक्सप्रेशन जो हमारा पर्टिकुलरली रिलेट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, उसी को रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब फॉर एग्जांपल ए है, मतलब कि कोएफिशिएंट हमारा ए है प्लस बी है एंड सी प्लस डी। तो रेट हमारा कैसे लिए हमने, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर हमारा एक्स और बी की पावर हमारा वाई, ठीक है। वेयर एक्स एंड वाई आर मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। तो एक हमारा तो रेट ऑफ रिएक्शन लोमा के हिसाब से होता है और एक हमारा यहाँ पे अलग से है। तो ये हमारा ए और बी की हो भी सकता नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन कोलाइडिंग टू ब्रिंग आउट ए इट कैनॉट बी जीरो फ्रैक्शन बिकॉज एलिमेंट्री रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कभी भी जीरो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट्स विद आर है, मॉलिक्यूलरिटी हमारी ए प्लस बी हो जाएगी। PCl3 जैसे हमारा मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन देख लिया, रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट देख लिया हमने। अब हम लोग क्या देखते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब टेम्परेचर डिपेंडेंस की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होता है हाइनेस इक्वेशन आती है, के इज इक्वल्स टू ए माइनस ई ए बाय आर टी, ए माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। एल एन की इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी, तो लॉग के माइनस इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए 2.303 आर टी, ठीक है। तो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाय 2.303 आर इंटू T2 माइनस T1 बाई T1 वेयर K1 एंड K2 और रेट कॉन्स्टेंट, जहाँ पे K1 एंड K2 हमारे क्या होंगे रेट कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर T1 T2 यहाँ पर हमारे क्या डेल्टा एच हो गया एक्टिवेशन एनर्जी और हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं स्यूडो, नहीं उससे पहले मैं इंटीग्रेटेड तो हम लोग ये कहते हैं आप देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में क्या डी ए बाई ए है इज इक्वल टू माइनस के डी टी, उसका इंटीग्रेशन टी और जीरो से और इसका ए टी ए नॉट से, ठीक है। तो फाइनली वहाँ आ जाएगा इसका ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, नहीं इससे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, तो ऐसे हम बताया ना ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। और यूनिट ऑफ के क्या होता है हमारा इसमें, मोल लीते इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और हमारा हाफ लाइफ क्या होता है आर नॉट बाई टू के, हाफ लाइफ हमारा आर नॉट बाई टू के, टी हाफ आर नॉट बाई टू के। हाँ टी हाफ क्या होता है हमारा आर नॉट बाई टू के, इसमें किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, मतलब कि ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू के, ठीक है, फॉर हाफ लाइफ। और टी 100% वहाँ कितना होता है, ए नॉट बाई के होता है, और टी 75 बाई टी 50% में कितना 3/2 होता है उसका रेशियो, और ऐसे ही करके होता है, ठीक है। इसका स्लोप ऐसा होता है, माइनस स्लोप यहाँ पे रेट ऑफ आर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, तो हमारा रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के आर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, ऐसा हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ हमारा इसका किस क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड इनवर्स, इसका टी हाफ क्या होता है 0.693 बाई के, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर का हम देखें तो क्या होता है के इज इक्वल टू 2.303 लॉग पी आई बाई 2 पी आई माइनस पी आई, ठीक है। तो reaction k d2 by c k is equal to 0.303 log id divided by terms of pressure also and its graphs, तो इसका भी ग्राफ हमारा ऐसा होता है कि इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन आर लो ऑफ हमारा रेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, तरह वो होता है रेट इज इक्वल टू के आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाई आर, ऐसा होता है। तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, टी हाफ इसका होता है 1 बाई के आर ए नॉट, ओके। तो रेट हमारे का था सेकेंड ऑर्डर इंटरसेप्ट 1 बाई आर नॉट, nth order reaction nth order reaction में ये होता है हमारा k इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 इंटू टी इंटू 1 बाई ए टी पावर n माइनस 1 बाई ए नॉट इंटू n माइनस 1, k is equal to 1 by n minus 1 into t is equal to 1 by 80 over n minus 1 minus 1 by e naught power n minus 1, t half e naught power n 1 minus n के इक्वल होता है, और t half is equal to p naught 1 minus n के इक्वल होता है। I got the hair finished. I will fill it back. Cut. This glass is very sweet because it's little sweet tea. Okay, so as I give some words of wisdom on every video, so today it would be like that. If you want to know what you are born for, you have to struggle at the initial state to be this much eligible that yes, the God also thinks you are worth knowing your own worth. Got it? I just make these lines by myself because on my understanding, because I feel if I would just copy from somewhere and tell you, most of the lines you would have already heard of, or my time would be wasted searching for lines. So obviously I say these lines by myself. Maybe it would be like this, that I have heard also from somewhere if I remember, but sometimes it's made by me only. So yeah, it's like that. Give me a toast and having a happy day ahead. Wish you a good day. Wish me too.
Now nth order reaction. So this reaction in this book is complicated, so I will forming mine. So k n 1 by n minus 1 into t is equal into 1 by a t power n minus 1 by a naught power n minus 1. In this also same as n minus 1 into kt, n minus 1 into kt is equal to 1 by a t n minus 1 and minus 1 by a naught n minus 1. Okay, so tell me, miss, nth order reaction, what is the equation? So it is k is equal to 1 by n minus 1 into t into 1 by a t power n minus 1 minus 1 by a naught power n minus 1. Good. And t half is the directly proportional to a naught power 1 minus n. T half is directly proportional to p naught 1 power 1 minus n. Okay, so we have finished the integrated rate equations. We have finished the rate of chemical. Okay, now we have to do this. Rate of chemical reaction. The average rate of reaction is the appearance of the products or disappearance of the reactants for a long period of time interval. So R is equal to minus delta R by T is equal to delta P by T. In cases of concentration of reactants, minus sign is used, and it implies that the concentration of reactants is decreasing with time. Instantaneous rate of constant, so R instant is minus dr by dt is equal to dp by dt. Rate of change in concentration of reactant at a particular time. Rate of change of concentration of reactant by or product at a particular time. कितना चेंज हुआ था उस पर्टिकुलर में से जाना है. हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हो गया, हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो गया, हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस हो गया, जो भी हमारे क्या कहते हैं 4 फैक्टर्स थे, कंसंट्रेशन, सरफेस या कैटलिस्ट और टेम्परेचर. हमारा क्या कहते हैं उसमें रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट हो गया, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ इक्वेशन हो गया. अब हम देखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, ग्रेडियंट इज नॉट कांस्टेंट. तो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन कन्फर्म्स द फर्स्ट ऑर्डर व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज टेकन इन लार्ज एक्सेस एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर बेंजोइक एसिड. So we are actually seeing the pseudo first order reaction. Have I not written that? No, I must. No section order. For example, hydrolysis of ester by dilute acid, so CH3C plus CH2, CH3COOH, C2H5. Reaction is generally obesecant or a kinetics, but the reaction is carried out taking dilute solution of ester and acid, so that in reaction mixture water exists in large excess as compared to each other. The reaction of its first order rate is equal to this. Molecularity of given above reaction is 2, but the order of reaction is 1. This is the thing actually happening. And now the collision theory of chemical reactions. So effective collision will result in the formation of product if collides with sufficient kinetic energy proper orientation. Data is equals to P dot Z AVE minus A by RT. In this no reaction, this no CO2 formation. Collision frequency is equals to data is equals to Z AVE minus A by RT. Collision number of collisions per unit volume of reaction mixture. So this is all about this. Collision is required between the reactant molecules to convert them into product. About the chemical kinetics. So should we move to the next chapter in this video only? Okay.